हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए 6th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिज़िकल एजुकेशन के डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो और सिलेबस के वीडियो भी यहीं पर आपको मिल जाएंगे। इसके मैक्सिमम मार्क्स 65 हैं। थ्योरी पेपर 60 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स की कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी। टाइम 3 घंटे है। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। 2-2 नंबर का एक होगा। 12 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इस तरह से हैं। मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड देन एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन। दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन मोल्ड करके डाला गया है। एंड देन व्हाट इज़ एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड देन enlist the names of 4 organs of excretory system, and then definition of sports training, and then what is vital capacity, and what is cardiac output, and then what is the meaning of blood pressure, and then what is a gland, and then what is the length and width of time of table tennis table, and then 2 career options in physical education, and then what is oxygen depth, and then where is the pituitary gland situated in body, and then explain the location of pituitary gland, and then which part of the brain helps you breathe, and then what hormone does the pancreas make, and next is definition of oxygen depth, and then write 2 responsibilities of a coach, and next is enlist any 2 functions of the nervous system, and next is what is stroke volume, and then write any 4 characteristics of a coach, and next is write the names of any 2 Arjun awardees in table tennis, and then define second wind, and next is what isometric muscle contraction, and then what do you understand by coaching philosophy, and next is what is the executory system, and next is what is sports training, and then write the officials of table tennis, what is the unit of nervous system, and next is spinal cord originates from which part of the brain, and next in our body involuntary actions are controlled by, and then what is the meaning of fatigue, and next major tournaments of the game। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन। यूनिट सेकंड में लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसमें है एक्सप्लेन द मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, एंड देन लिस्ट आउट द मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम विद इट्स फंक्शनिंग, एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द रेसिप्रोकल इन्वर्शंस, एंड देन व्हाट इज द नर्वस सिस्टम, डिस्कस इट्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स, and then write down the meaning of glands, their location and functions, and next is what is endocrine system, write about location and functions of pituitary gland, thyroid gland and parathyroid gland, and next write in detail about excretory system, discuss the main functions of excretory system, and then write the structure and functions of excretory system, and then explain the structure and functions of kidney, and then draw a diagram of kidney and explain the structure of kidney, and next diagram of brain and explain its parts and their functions, and then what is the meaning of nervous system, define reflex action and interventions, and then write the meaning of glands and also explain hormones produced by them, and third unit explain the characteristics of sports training, and then what do you mean by sports training, write the aims and characteristics of sports training, and next write down the meaning and characteristics and principles of sports training, and then what are the effects of sports training on muscular and circulatory systems, and then write the muscular contractions such as isotonic, isometric and isokinetic detail, and then what do you understand by stitch in the side, write its causes in psychological concepts, and then write the effects of post training on respiratory system,
and then write down the effects of physical training on circulatory system of the body, and then what are the effects of exercise on circulatory system, and then what are the causes, effects and treatment of hypertension, and then explain the causes and effects of hypertension, and then what is the meaning of blood pressure, write its causes, effects and treatment, and then explain any two muscular contractions. अब है यूनिट 4 जिसमें है एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, and then explain in detail the courses and institutions available for physical education profession, and then what do you mean by career aspects in physical education, write in detail, and then enlist the institutions and courses available in physical education profession, and then explain the different avenues in physical education, and next discuss on the following career options in physical education, self assessment for career choice. And unit 5th के long questions, explain the qualification and characteristics of a coach and then define coach, explain the responsibilities of a coach, and then what do you mean by coaching, write the qualification of a coach. स्टूडेंट्स इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस के वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो. एंड देन डिफाइन द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द टेबल टेनिस गेम, राइट द बेसिक फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टेबल टेनिस गेम एंड ड्रॉ द लेआउट ऑफ टेबल टेनिस गेम्स टेबल, and then write a brief history of table tennis and Arjun awardees of the game, and then draw the court and explain the basic fundamentals of table tennis, and then write the rules and regulations of the game table tennis, and write the philosophies of coaching and its characteristics. स्टूडेंट्स ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनकी तैयारी अच्छी से कर लेना. इसके अलावा अगर ये वीडियो पंजाबी और हिंदी मीडियम में चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना दिया जाएगा. थैंक यू सो मच. और भी इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में.